In the quantum mechanics, we're discussing basically the behavior of the subatomic or the atomic particles only. And that is very interesting and very difficult, actually. Let's start this topic. Here we first discuss the postulates because if new things will come into the picture and there is some postulate associated with it. Let's see the five postulates that will comes in the quantum mechanics. Let's see. Here the first postulate is the describe about the state actually. What is state? Here the state is actually a system basically where our particle is moving actually. In the classical mechanics, in the classical mechanics, there is a system like a plane actually, where our particle associated with the position, momentum only. And from these parameters, we calculate many things. Like we have the position, then we have the dx by dt velocity, and if we double derivative, then we get the actually acceleration. And talking about the momentum, we can calculate its energy p square by 2m. And as we know that there are too many factors जैसे कि f equals to ma हो गया, from we can calculate too many things from two parameters. Here we only discuss about the xy plane actually, but in the quantum mechanics there is a imaginary plane also, so it makes very difficult to understand. Here we discuss the something parameter, जैसे कि यहाँ पर हम x और p देख रहे थे पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोग की जगह पर कुछ टर्म्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज द वेव फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वेव फंक्शन। एक्चुअली जहाँ पर हम x और p पढ़ रहे थे क्लासिकल में, वहाँ पर हम लोग इसकी जगह पढ़ते हैं वेव फंक्शन। ये क्या बता रहा है? इसके साथ एसोसिएटेड सब कुछ बता दे रहा है। सिमिलरली वेव फंक्शन क्या बताएगा के बारे में? एवरीथिंग इट विल एक्सप्लेन हियर। लेट्स सी कैसे एक्सप्लेन करता है ये। जो साई होता है वो फंक्शन होता है एक्स एंड टी का, डिस्क्राइब करता है होल सिस्टम को, एंड इट इज जनरली अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन तरीके से होता है ये, आई विल एक्सप्लेन लेटर। For the properties of a function, we basically see that the psi is contain all information, but it does not have any physical significance. Here we discuss basically what is the psi. Psi is the wave function, and the psi has we can be expressed in the terms of x and t actually, and x is the position and the time is the invariant actually. And if we see the position and the time is a complex function actually. So we'll let a function sometime equals to minus x plus iota t. So we can bracket e to power minus x comma e to power iota t. Here the e to power minus x represent the wave particle move in the positive x direction, and the iota t is the associated complex function that is the imaginary part actually here. Let's take a single particle system here. That single particle system in the quantum mechanics, the single particle position is unknown actually. Why it is unknown? Because there is a complex function that is associated with the time. That time is varying actually. So we can't determine its position actually. So we can't know its position. But how to solve this types of things? We can't know, but we can predict the maximum probability of the finding electron. Why and how? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि हमें पता है कि साई क्या होता है,
ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर आयोटा टी के फॉर्म में होगा। तो अगर हम हमें आयोटा को हटाना है यहाँ से, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की पावर का कॉन्जुगेट ले सकते हैं। कॉन्जुगेट लेने से होगा क्या कि जो आयोटा होता है वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस आयोटा टी हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज बिकम द साई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2x and the complex part will be removed. So we can say that that is the probability density of the function where there is no time function. Means that it is a fix actually, and that is known as the probability density where the particle has maximum finding probability. And let's see how it is working and how it is calculated. Let's see some important point about the wave function. जो वेव फंक्शन होता है वो पहले तो प्रोबेबिलिस्टिक होता है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। ये प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन क्या होती है एक्चुअली, अगर हम किसी भी सिस्टम को मानते हैं, अगर कोई पार्टिकल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये माइनस इन्फिनिट है या प्लस इन्फिनिट है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम उसको इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें जो इस बॉक्स का वॉल्यूम होगा, उसकी लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लगा दें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी पाने की, दैट इज एक्चुअली 1। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा, एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है, अगर उसको हम उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज कॉल्ड डी टाउ एक्चुअली, that is comes out to be 1, and that is also known as the normalization of a wave function. Where d tau is dx dy and dz that represent the volume, and जो wave function होता है वो बेसिकली क्या होता है, फाइनाइट होता है एंड वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ब्रेक तो नहीं कर सकते ना कोई भी वेव, ये उसका कंटिन्यूस होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इट बी कंटिन्यूस एंड द डेरिवेटिव का जो फाइनाइट होना चाहिए, एंड इट विल एग्जिस्ट, it we will get the finite value of the derivative, and it is represented by the d phi by dt or d phi by dx sometime। तो वो क्या होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। साई होता है वो नॉन लोकल क्वांटिटी है बेसिकली, बिकॉज इसकी वैल्यूज होती है, अगर हमें उसकी एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू नहीं मालूम होगी तो वो टाइम के साथ क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, अगर ये अभी इस पोजीशन पे है तो वो सर्टन टाइम के बाद किसी और पोजीशन पे होगा, अगर उसका एक्स भी वेरी कर रहा है एंड टाइम भी वेरी कर रहा है, हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, इसलिए वो नॉन लोकल क्वांटिटी है। इसलिए हमें एवरी पोजीशन ऑफ द एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब ई की पावर माइनस एक्स की अगर वैल्यू पता है तभी हम उसका टाइम से रिलेट कर सकते हैं, और किस टाइम पे किस पोजीशन पे होगा हम पता कर सकते हैं। तो दोनों पोजीशन एंड टाइम एक्चुअली हम पता नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉन लोकल क्वांटिटी में चला जाता है, दैट इज साई।